Assalamu alaikum, healthcare professionals. Today we will discuss in this session about the assessment methods in undergraduate medical education. यानी हम अपनी स्टूडेंट्स की जब असेसमेंट करते हैं तो कौन कौन सी प्रोसीजर है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। हम अगर नॉलेज असेस करते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के हम कर सकते हैं। और अगर हम उसकी जो वर्टिकल डोमेन है, जो साइकोमोटर डोमेन है, उसको हम किस तरह असेस करते हैं। और यही दो मेन कैटेगरीज है कि जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की असेसमेंट कर सकते हैं कि व्हाट दे नो अबाउट समथिंग, एंड इफ देयर इज एनी सपोज क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है तो किस तरह करेंगे, या कोई ट्रीटमेंट है तो हाउ दे विल डू दैट। तो ये दोनों डोमेन जो हैं, जो इसका कॉग्निटिव डोमेन है एंड साइकोमोटर डोमेन है, ये हम असिस्ट किस तरह करेंगे। तो ये इस सेशन में हम डिटेल से उन तमाम जो सेवरल मेथड्स जो है, इन दोनों नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जो है उसको असिस्ट करने में यूज की जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें हम जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। So the objectives of this lectures, they are at the end of this lectures, you all will be able to describe various assessment method to assess the knowledge of undergraduate students of health sciences, as well as we will discuss the assessment method to assess the critical skills of undergraduate students of health sciences, and you all will be able to describe them. So first of all, before going to that, different methods of assessment, we will discuss the Miller's parameter. Which also known as the Miller prism or the Miller pyramid of clinical competence. ये कब हुआ, ये बात है 1990 की। In 1990, there was an educationist, George Miller. उसने एक मॉडल बनाया, और इस मॉडल उसने, इससे पहले जो ट्रेडिशनल था वो सिर्फ जो था स्टूडेंट्स की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उसकी असेस होती थी। जो उसकी नॉलेज है उसमें एमसीक्यूज टाइप या रिटन असेसमेंट होती थी। तो 1990 में जॉर्ज मिलर ने एक न्यू मॉडल जो है आउटलाइन किया, और उसको नाम दिया गया द मिलर पिरामिड या द मिलर प्रिज्म। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की जो ट्रेडिशनल असेसमेंट वो सिर्फ रिटन या उसकी नॉलेज असेस होती हैं, जिससे उसकी जो तमाम कम्पिटेंसीज जो है, स्पेसिफिकली टेक्निकल कम्पिटेंसी जो है, वो सही तरीके से असेस नहीं होती। और ये जो तरीक़ेकार चल रहा है ट्रेडिशन, दैट इज नॉट इनफ टू असेस the healthcare students in their real life, or in their real life when they are passing towards the patient. So his model, which is also known as the Miller prism, as we discussed, as known as the Miller pyramid, was the basis for an important move away from that traditional Flexnerian medical education model. This Flexnerian medical education model was that traditional model which was only based on assessing the knowledge of the theory of the healthcare students. Miller pyramids or Miller prism that is divided into 4 hierarchical levels. On the lowest level, that is the nose, that lowest level of pyramid is the knowledge tested by the written exam and traditional multiple choice question. The next level that stands for the application of the knowledge, which is assessed by the essays, clinical problem solving exercises, and the extended matching type MCQs. The third tier of this pyramid that represent the clinical skill competency, which can be assessed by the standardized patient exercises simulation and the OSCEs or the OSPs. While the finally on the top of pyramid is the clinical performance, which is assessed by direct observation in the real life clinical setting. The lower level processes account for the cognitive components of the competence and involve the classroom-based assessment, while the two higher tier of the pyramid account
for the behavioral components of the clinical competencies, which involve the assessment and simulated and real clinical setting. So we will discuss these two initial in detail, and then we will discuss in these two level in detail that what are the different assessment methods through which we can check the cognitive domain of our students, and what are the different assessment methods through which we can assess the clinical skills, the clinical competency of our students. These two level, as we discuss, this is cognition, they are assessing the cognitive level, and these are assessing the behavioral. In the bottom, that they are assessing the novice students, and as it grows to the top, so we are assessing the students now, they are expert at their studies, at their level, at their discipline. So in this three pyramid, the students are assessed on all the three domains of the Bloom's, in which there was the cognitive domain, psychomotor domain, and the affective domain. This was some description of the Miller prism of clinical competence, which is also known as the Miller pyramid. अब अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से मेथड जो हैं ये यूज होते हैं नॉलेज असेस करने के लिए, तो मुख्तलिफ तरीके हैं, और सबसे जो कॉमन तरीका है, दिस इज द रिटन मेथड। और इसी रिटन मेथड के फिर जो है फर्दर जो है सेवरल मेथड्स हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, और उनमें सबसे कॉमन जो है दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि हर एक जो नॉलेज है, हर एक नॉलेज को या हर एक इन्फो को, हर एक कॉम्पिटेंसी को जो है हम हर एक क्वेश्चन से असिस्ट नहीं कर सकती। हर एक इस तरह हम कर सकते हैं कि हर एक कॉम्पिटेंसी के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, हर डेटा के लिए, हर नॉलेज के लिए जो है हर एक क्वेश्चन फिट नहीं होता। तो जिस तरह अगर हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखें या क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो वहां पे शायद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे आर नॉट द फिट असेसमेंट मेथड, बट इफ दे आर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली, then we can also assess the problem solving ability of our student, as well as the clinical decision and the differential diagnosis of our students, our healthcare students. So that's why after this lecture, in which we are going just to describe briefly different methods, चूंकि एमसीक्यू ज्यादातर यूज होती हैं, तो हम जो नॉलेज असेस करने में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर एक सेपरेट सेशन लेंगे, और जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी जो असेस को उसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं दिस इज द ऑस्की एंड ऑस्पी। इसलिए जो है हम ऑस्की एंड ऑस्पी पर भी एक अलग सा सेशन लेंगे। So certain question format are more suitable than others for asking certain types of question. When explanation is required, an essay question will be obviously more suitable than an MCQ. Every format have its advantages and disadvantages. There is no such format जो हम कहें कि भाई this is one is the perfect. इसमें जो है there is no disadvantage. हर एक की कुछ जो है pros and cons है। तो हमने फिर देखना होता है कि अगर हम जो है क्या चाहते हैं, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अंदर ऑब्जेक्टिव की देखते हुए फिर एज टीचर जो है हम डिसाइड करते हैं कि नाउ हमारा असेसमेंट मेथड क्या होनी चाहिए। So that's why already we have discussed in detail previously about what we mean by the objective cognitive domain की क्या objective है, इसको उसकी सब लेवल जो देखते हो, देन उसकी सब लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन उसके किस तरह ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव जब हमारे सामने होंगे, तो उसकी बेस पर जो है हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो असेसमेंट मेथड है ये क्या हो सकते हैं। सो और इसलिए अगर देखा जाए तो चूंकि एक किस्म की ऑब्जेक्टिव तो होती नहीं है, तो दैट्स वाई एक कुरिकुलम में कॉग्निटिव भी होती, डोमेन भी होती है, साइकोमोटर डोमेन भी होती है, अफेक्टिव डोमेन भी होती है। दैट्स वाई जब हम स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, so the assessment should be a combination of different a variety of formats which involve not only the assessment of knowledge but also there should be assessment of the critical skills of the clinical competencies.
So these are the list of those various and different methods which can be used to assess the knowledge and its implication in our students. Among them, the most commonly used is the multiple choice question, specifically the A-type multiple choice question. Multiple choice question of the R type, which are also known as the extended matching items, EMI, also known as the extended matching question, the EMQ. There are multiple choice questions by this type, which are known as the R type. They are less used as compared to the A type of multiple choice question. What is we mean by the A type and R type? We will discuss in the upcoming slide. उसके बाद जो है आते हैं की फीचर्स क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंड द स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट. ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को असेस कर सकते हैं, और हम इसके एक एक को इंशाल्लाह ब्रीफली अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शॉर्टली ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करेंगे, इसकी डिटेल में कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ एमसीक्यूज, what are the pathologies of MCQs, how we can manage the pathology of these MCQs, how to construct and effective MCQs, what are the common flaws in during the construction of the MCQs. तो ये तमाम जो सब टॉपिक है इंशाल्लाह इस पर हम एक अलग सेशन लेंगे. So these MCQs A type, which are also known as one best answer, the students they have a question, then there will be have an 4 or 5 answers. There will be one best answer. Students have to select that one. So these are known as the A type, and these are the most commonly used question type. They require examiners to select a single best response from 3 or more options. They are relatively easy to construct and enjoy high reliability per hour of testing, since they can be used to sample a broad content domain. अब इससे मुराद क्या है हाई रिलेबिलिटी पर आवर ऑफ टेस्टिंग? ये अक्सर अगर हम एमसीक्यूज देते हैं ना, तो हमें पहले पता होता है कि भाई 60 एमसीक्यूज है तो 90 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ. अगर हमने देखिए भाई 120 एमसीक्यूज है, सो इट मीन 150 मिनट्स और 160 मिनट दे विल बी इनफ. तो इससे जो है ये कि हमें पहले से, और वो वाकई में उसी मिनट में स्टूडेंट जो है ये एमसीक्यूज कर लेते हैं. जबकि अगर हम उधर देखें इससे टाइप क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में देखें, तो उसमें अगर हम कुछ टाइम इनके लिए तो अक्सर उनका टाइम खत्म हो जाता है, एंड स्टिल दे हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सो वहां पर जो पर आवर टेस्टिंग जो है उनकी रिलेबिलिटी इतनी नहीं है एज कंपेयर टू अदर असेसमेंट मेथड्स. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे आर हैविंग द हाई रिलेबिलिटी पर आवर ऑफ टेस्टिंग. यानी बार बार अगर हम उस प्रैक्टिस करें, आप अपने हम देख सकते हैं कि हर एग्जाम में सपोज अगर हम मिसाल केएमयू की, तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो फाइनल टर्म एग्जाम होता है उसमें 70 एमसीक्यूज होते हैं, और उसके लिए 90 मिनट्स होते हैं, एंड स्टूडेंट्स बार बार जो है इसी को 90 मिनट्स में ये एमसीक्यूज कंप्लीट कर पाते हैं. सो इसको कहते हैं दैट हाई रिलेबिलिटी पर आवर ऑफ टेस्टिंग. दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट. हम तो कह सकते हैं कि easy to construct, but those who know how to construct उनके लिए जो है ये बहुत easy है. But if someone don't have such experience, or they don't know about what are the different pathologies, what are the common flaws, उसकी थोड़ी सी उसकी enlightenment नहीं है, तो फिर जो है that's very difficult to construct. एमसीक्यूज बनाना बहुत आसान है, लेकिन इफेक्टिव एमसीक्यूज बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल है. और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा आफ्टर दीज असेसमेंट मेथड्स इन नॉलेज एंड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज, उसके बाद जो हमारा होगा दैट विल इन डिटेल में हम एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. MCQs, they are often misconstructed as test of simple facts, but if constructed well, they can test the application of knowledge and problem solving skills. ये हमने previous time में भी डिस्कस की कि अगर देखा जाए तो जो clinical decision making है, differential diagnosis है, or we can say that the selection of treatment, the best treatment for that patient, or that problem solving ability जो है, तो ओवरऑल इस जनरली जो है MCQs they are not the fit assessment method for assessing these competencies, but if they are constructed well,
then we can also assess all these competencies. If questions are context-free, they almost exclusively test factual knowledge, and the thought process involved is simple. जब हम इंशाल्लाह डिटेल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय द context rich MCQs and what we mean by the context free MCQs. There are two types of MCQs, the context free MCQs and the context rich MCQs. तो अगर ये context free है तो फिर सिर्फ और सिर्फ सिंपल नॉलेज जो है, फैक्चुअल नॉलेज जो उसकी यूज होती है। लेकिन अगर हम context rich जो है एमसीक्यूज यूज कर सकते हैं तो फिर उससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ये भी असेस कर सकते हैं। सो ये जो कंटेक्चुअल्स हमने बात की कि ये जो कंटेक्स्ट फ्री है या कंटेक्स्ट रिच है, ये कंटेक्चुअलाइजिंग जो है ये मुख्तलिफ जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज है या लेबोरेटरी सीनियर्स हैं, ये तमाम उससे हम जो है चेक कर सकते हैं। बट ये है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट देम। बाज़ औक़ात इसमें इस तरह होता है कि जो अननेसेसरी डेटा उसमें आ जाता है, सो टू मच लेंथी हो जाता है, अगेन उससे वो जो वेल कंस्ट्रक्टेड वाली चीज़ है वो उसमें नहीं रहती। तो इट मीन कंटेक्चुअलाइजिंग जो है ये तो होनी चाहिए, बट उसकी भी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसकी बात जो है अगर हम उस रूल्स के मुताबिक अपने एमसीक्यूज बनाए, सो देयर विल बी अ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड एमसीक्यूज। So contextualizing the question by including clinical or laboratory scenarios not only conveys authenticity and validity, but also is more likely to focus on important information rather than trivia. और ये trivia से मुराद वो है जो हम unnecessary information जब हमने बात की, तो उसकी बजाय जो unnecessary information की बजाय जो important information है, ये उस पर फोकस रहती है in the well constructed context rich MCQs. The third process involved is also more complex, with candidates weighing different units of information against each other when making a decision. कुछ benefits जो है MCQs की ये हैं कि they are less costly. आप जो है एक 70 MCQs जो हैं you can just put them on paper and 3-4 pages में आप पूरा पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और शीट जो MR शीट है, वो लग जाता है, एंड इसके अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं है जो रिक्वायर्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द एमसीक्यूज। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी लेस कॉस्ट। इसी तरह अगर इसकी मार्किंग की बात की जाए, सो देयर इज नो नीड ऑफ इन एक्सपर्ट पर्सन फॉर मार्किंग द क्वेश्चन। कोई भी अगर उसके पास की है, सो दे कैन चेक द क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। ऑन द अदर हैंड बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेसिफिकली द ऐसे टाइप क्वेश्चंस, उसके लिए फिर जो है एक्सपर्ट पर्सन या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है उसका होना जरूरी है। दे आर आल्सो रिक्वायर लेस टाइम फॉर मार्किंग। एक्सपर्ट पर्सन हो ना हो, लेकिन ये भी है कि इस टाइम कंजप्शन की अगर बात कीजिए तो बहुत कम टाइम जो है इसकी मार्किंग पे लग जाती है। और अगर मार्किंग जो है ये नाउअडेज जो मॉडर्न तरीका है कि जिसमें से आंसर शीट जो है, जो एमआर शीट है, ऑब्जेक्टिव मार्किंग शीट जो है, ऑब्जेक्टिव मार्किंग रिस्पांस जो है, ये स्कैन होती हैं, तो वहां से फिर और भी जो है ये ह्यूमन रिसोर्स भी कम उसकी जरूरी होती है, और भी जो है टाइम जो है ये उसकी बचत होती है टाइम की। So this is an example of the A type of the MCQ. This is known as that vanity or scenario. This is also known as the stem of the MCQ, while this is known as the leading question. And these all are the different options. And these options in some will be distractors and some will be the key option. The distractors, they are the wrong option, and the key option is the right one. So in this MCQs, if we read it, a wrestler visit physical therapy clinic with complaint of global shoulder pain. On examination, it was revealed that the pain is activity related. On objective examination, there was positive irrigation test and pain with left up test. Now we have some contextualization in this MCQ. So we can assess
that some complex knowledge of our students. So अगर ये टेस्ट दोनों टेस्ट पॉजिटिव है, so it means there will be a very specific answer for that shoulder pain, because these are the two specific tests which will be for that disease. So after that conceptualization, we as a teacher then asked from the students a question that what is the possible etiology. कुछ एमसीक्यूज इस तरह होते हैं कि पूरी सिनेरियो होती है और फिर लिखा जाता है कि नाउ व्हाट इज द पॉसिबल diagnosis, या what is the most appropriate diagnosis. So that question is the end is known as the lead in question. So subluxing long head of the bicep with partial subscapular tear, slap lesion, anterior instability, or infraspinatus tear. These are the different options. And among them, the B, C, and D, they are the distractors, which are the wrong option. And this one is the correct option, which is known as the key option. So this is these are some those examples जो अभी हमने discuss किया कि what we mean by the context free and context rich. So these are just examples of those context free and context rich. अगर हम पहले एमसीक्यूज में देखिए mechanism of posterior shoulder dislocation is, there is no detail in this question that what shoulder dislocation is, what we mean by the mechanism. So there is no contextualization. So this type of MCQ is known as the context-free MCQ. Here there are again some detail about the patient. So this is known as the context-rich. And the previous slides, that was also a context-rich MCQ. And this question, this procedure is regarding assessment of which ligament of shoulder. This is a procedure of assessing one of the ligament of the shoulder, that may be the superior or the middle or the inferior glenohumeral ligament. So this extension is known as the lead in question. This is known as the vanity or known as the scenario. And this is a context-rich question. अब आते हैं towards the other type of the MCQ, which we call as the R type, are also known as the extended matching item. The EMI are known as the extended matching question, which shortly known as the EMQ. So one approach to context-rich question is extended matching question, or extending matching item. EMIs are organized into set of short clinical vanities or scenarios that use one list of options that are aimed at one aspect. For example, all diagnosis, all laboratory investigation, etc. And the option they can range from 5 to 26. अगर हम previously देखें वहां पे 3 or more than 3 थी, यहाँ पर जो है 26 तक जो है option हो सकते हैं. Some option may apply to more than one vanity, while others may not apply at all. A well-constructed extending matching set include 4 components. जिस तरह हमने previously उसमें कहा था कि उसमें ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक की ऑप्शन होगा एंड बाकी डिस्ट्रैक्टर्स होंगे, एक लीडिंग होगा और दूसरा जो है इसमें वेनिटी और सीनियरू और दैट डिटेल जो होगा उसमें होगी. यहाँ पर भी इस आर टाइप एमसीक्यू की भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. दीज कंपोनेंट्स आर थीम, फिर उसके बाद जो है हम उसकी सब थीम और वो फिर आगे उसकी हायरार्की में आते हैं. लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव कार्ड इज द थीम, then the option list, then the lead in statement, and it leads to item stems. So like the MCQ, they also don't require expert person and subject specialists to mark the question, and hence they are less costly. They also require less time in marking. So this is an example of that R-type MCQ. This is the theme. There are the different options, and for each description involved bone, select the most likely anatomic structure. Mitosis in these structures are responsible for the longitudinal growth of bone. अब स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो ये जो A B C D E F G H, ये जो 26 तक ये ऑप्शन हो सकते हैं. इसी क्वेश्चन के लिए पहले स्टूडेंट जो हैं ये रीड करेंगे एंड फिर इनके लिए कुछ इस तरह की 10 12 26 तक ये ऑप्शन हो सकते हैं. फिर इनसे कुछ क्वेश्चन होंगे
और इस क्वेश्चन में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सो ये एक से ज्यादा आंसर्स भी जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द longitudinal growth of bone. Similarly, this structure contain a secondary center of ossification during the bone development. और कौन सा स्ट्रक्चर है फ्रॉम ए टू आई, आर ए बी भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट the option. They have to write the option under the question 1, they have write the question under 2, or they just write the a b c d, just a b c d b the key, so that would be the answers to that question. So this is an example of the R type question कि जिसमें से अब इसमें अगर आप देखिए ये काफी मुख्तलिफ सिंपल एमसीक्यू से जो ट्रेडिशनल एमसीक्यू है जिसको हम ए टाइप एमसीक्यू कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ स्टेम होता है, उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन होती है इफ इट इज द कंटेक्स्ट रिच, और अगर कंटेक्स्ट फ्री है तो एक सिंपल सा लाइन एक स्टेम होती है, देयर इज नो लीडिंग, और उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन भी जो है 5 से ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ज्यादा हो सकते हैं, और इसमें से एक एमसीक्यू के अंदर जो है 2 3 4 एक क्वेश्चन हो सकते हैं. अब आते हैं टुवर्ड्स द अनदर असेसमेंट मेथड दैट इज नोन एज द की फीचर्स क्वेश्चन, and these shortly known as the KFQ. So the KFQ are the key features question. They are short clinical cases or scenarios which are followed by questions aimed at key features or essential decision of the case. These questions can either be multiple choice or open-ended questions. More than one correct answer can be provided, just like the previous R-type MCQ. So these key KFQ, they have been educated to test the clinical decision-making skill or problem-solving ability with demonstrated validity and reliability when constructed according to the certain guidelines. As compared to the previous two types of assessment methods, the A-type MCQ and the R-type MCQ, this key feature questions, they have to be proved to be more valid for assessing this problem-solving ability. अगर हम जनरल नॉलेज जो उसकी फैक्चुअल नॉलेज वो चेक करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अगर हम चेक करना चाहते हैं तो देन एमसीक्यू बोथ ए टाइप एंड आर टाइप दे आर द मोर एप्रोप्रिएट, दे आर फिट फॉर दैट. लेकिन अगर हम इस तरह की उनकी जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, या जो है द बेस्ट ट्रीटमेंट सिलेक्शन है, जो गाइडलाइंस है, ये जो है इसके लिए फिर ये वन ऑफ द मोस्ट वैलिड एंड मोर रिलायबल जो है असेसमेंट मेथड है की फीचर क्वेश्चन. They are less well known than the other types and their construction is time consuming, especially if teachers are inexperienced question writers. So this is an example. ये पूरा एक सिनेरियो है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन होगा which of the following is the best next step. अब ये अगर यहाँ पे देखिए सो इसमें से they can just make the sequence of these step. ये सबसे पहले स्टेप जो है ये होगा, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, या यहाँ पे जो है एक ठीक हो सकता है, बाकी जो है दे आर नॉट द रिक्वायर्ड स्टेप्स. तो ये जो है इसी तरीके से जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है देन द दैट आर टाइप एंड ए टाइप एमसीक्यू. तो यहाँ पे पूरा एक सिनेरियो जो है एक विनर टीम के सामने जो है बयान की जाती है कि इस तरह एक पेशेंट है और वो आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, उसकी हिस्ट्री में ये चीज आ गई, ये हो गया, फिर ये हो गया, और इसके फिर ये सिम्टम्स थी. आफ्टर द सिम्टम ऑब्जर्वेशन जब उनकी एग्जामिनेशन की गई तो वाइटल साइन ये थे, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड फॉर ये था, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड फॉर ये था, उसकी स्पेशल टेस्ट अगर कुछ है या कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है तो उसकी ये रिजल्ट आए हैं. अब आगे जो है आप क्या करेंगे. तो ये जो है सारे की सिनेरियो में जितनी भी डेटा है इनको गैदर करके इसको फिर जो है इसकी इंटीग्रेशन करेगा, और इसको फिर सोच के बाद फिर ये एक डिसीजन लेगा. तो दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर मोर फिट फॉर दैट assessing the clinical skills or the clinical decision making or the problem solving ability. The short answer questions, they again, as compared to the others, mostly they are the close-end questions,
In the open-ended questions, these are those which are most commonly used along with the essay type question. So the short answer questions, shortly known as the SAQs, they are open-ended question. Open-ended question mean the students, they are allowed to write from their self. It's their own, their will and their choice what they are writing. Or in close-ended question, they are restricted to the options which are available. They can write option from themselves. They have to select the answer from the available option. So these are the open-ended questions that require students to generate an answer rather than to select from a fixed number of options. Since they require some time to answer, not many SEQs can be asked in an hour of testing time, and that's why ज्यादा से ज्यादा अगर 1 घंटे में स्टूडेंट हल कर सकता है तो 10 जो है शॉर्ट आंसर कर सकता है। अदरवाइज ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी जो है ये 1 आवर जो है ये टाइम कम है। तो इसीलिए हम जो पहले कर रही थी कि उसमें हम जो है ज्यादा ऑब्जेक्टिव असेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दिस लीड टू द लेस रिलायबल टेस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सैम्पलिंग। लिमिटेड सैम्पलिंग से मुराद ये है कि सपोज हमारी 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स अगर हम सिंपल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उससे पेपर बना लेते हैं तो अगर हर एक से हम एक ही क्वेश्चन भी निकालते हैं तो फिर भी 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगी जो बहुत ज्यादा है। और एक क्वेश्चन भी अगर हम पूरी चैप्टर से निकालें तो उससे हमारा जो अगर ब्लूप्रिंट हम बना लें, उसकी जो हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लें, जो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये दोनों, तो इससे होगा क्या कि इसमें बहुत सारी जो हमारे एक्सप्लेनेशन जो चाहिए, जो हम असेस करना चाहिए वो रह जाएगा। तो यहाँ से सपोज वी हैव दैट एट ऑब्जेक्टिव्स और उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव को असेस करते हैं, बाकी 7 रह जाते हैं, तो ये उस सही नहीं है। तो दैट्स इसलिए जो है ये कहते हैं कि दे आर लेस रिलायबल टेस्ट बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड सैम्पलिंग। The requirement to be marked by a content expert make them more costly and time consuming, obviously, as compared to the that MCQs, both A type and R type and the key feature questions। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और आप हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो जो है यहाँ पे हायर करना होगा या उसको जो है पेपर्स जो है वो अलाउड की जाएंगी ताकि वो इसकी चेकिंग करे। ऑब्वियसली दे विल नीड द remuneration for that, so that's why they are most cost as compared to the other types of assessment. So these questions may be subject to less reliability if different markers marks the same question of a single group। सही, ये थोड़ा सा एक इश्यू आता है कि अगर एक क्लास है उसमें तकरीबन 60 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 3 एग्जामिनर जो हैं ये उनको एहसान की जाती हैं कि आप इनके पेपर चेक करें। एक एग्जामिनर 20 स्टूडेंट्स की करते हैं, दूसरा 20 की करते हैं, तीसरा 20 की कर देता है। अब ये इनकी मार्किंग जो है उसकी डिपेंड करता है कि शायद एक क्वेश्चन जो इनकी मार्किंग थोड़ी सी दूर ज्यादा मार्क देगा, एक जो है वो थोड़ी सी कम मार्क्स देगा, तो इससे जो है इसकी रिलेबिलिटी जो है ये और भी कम हो जाएगी, उसकी जो रिजल्ट से ये बायस्ड हो जाएगी। तो इसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि अगर इस तरह है तो वो क्वेश्चन डिवाइड करे कि अगर सपोज टोटल 10 क्वेश्चन है और ये सपोज 3 बंदे हैं तो 3 3 4 इस तरह क्वेश्चन डिवाइड करे और हर एक स्टूडेंट का जो 3 क्वेश्चन है वो एक बंदा चेक करेगा, तो उससे उसकी जो रिलेबिलिटी है वो अपनी बरकरार रहेगी, दे विल बी हाई रिलेबिलिटी। It is important that the questions are phrased unambiguously and a well-defined answer key is written before marking the question। अगर पहले से एक शॉर्ट आंसर जो है ये नहीं है तो फिर जो है चेकिंग में थोड़ी सी वो बायसनेस आएगी, उसकी जो मार्किंग में उसमें बायसनेस आएगी। इसलिए जो मार्कर है या जो चेकर है जो उसको शीट शीट में जो उनके आंसर शीट पर उसको अगर मार्किंग करेगा, उसको पहले से अगर एक स्ट्रक्चर आंसर पड़ा हुआ है शॉर्ट तो उसको देखते हुए जो है वो सबके साथ यूनिफॉर्मली जो है मार्किंग करेगा। If multiple exam is available, डबल मार्किंग इज प्रिफर्ड। डबल मार्किंग से मुराद ये है कि अगर एक जो है उसको एक दफा चेक करे तो दूसरा भी जो है उसको फिर चेक करे तो इसका जो एवरेज है ये फिर निकाला जाएगा। लेकिन
इसमें ये होगा कि ये तब पॉसिबल है व्हेन देयर इज मल्टीपल एग्जामिनर्स अवेलेबल। इससे होगा क्या कि उसके रिजल्ट्स और भी जो है अच्छी हाई रिलेबिलिटी के साथ आएंगे, कि इसमें से अगर एक टीचर उसको लूज मार्क दे, दूसरा कम दे रहे थे, दोनों का एवरेज आ जाएगा। लेकिन ईच एग्जामिनर विल चेक द सेम क्वेश्चन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये बहुत जरूरी है। ईच मार्कर शुड मार्क द सेम क्वेश्चन फॉर ऑल द कैंडिडेट, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो इसकी रिलेबिलिटी जो है बहुत मुतासिर होगी। This lead to the more reliable score than if each marker marks all the question of one group of candidates while another marker marks all question of another group। तो ये जो है, जिस अभी हमने 2020 वाली बात की, तो ये उसकी कहानी कर रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर वहां पर जो है हमारे रिलायबल स्कोर जो है नहीं आएंगे। Essay questions, they are used when candidates are required to process, summarize, evaluate, supply, or apply information to the new situations. They require much more time to answer than short answer or multiple choice question, and therefore not quite as many questions can be used for our testing, and their lower reliability, जो आगे previous slides में हमने ये discuss किया था इस phenomena को। Structuring, but not over structuring the marking process and using a correction scheme similar to the one used for the short answer question can improve reliability, but it is really difficult to have proper and appropriate structuring. Sometimes there may be under structure and sometimes there may be over structuring, और यही वजह है कि जो है उसकी रिलेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी रिलेबिलिटी जो है शॉर्ट आंसर की है और जितनी रिलेबिलिटी एमसीक्यूज की है। The guidelines for writing short answer question apply also to the essay question. अब आते हैं another type of the open-ended question to assess the knowledge of our healthcare students, and this is known as the modified essay question. There is a special type of essay question that consists of a case followed by a series of questions that relate to the case and that must be answered in the sequence asked. This leads to the question interdependency, and a student answering the first question incorrectly is likely to answer the subsequent question incorrectly टू, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस जो है ऑलरेडी उसको बनानी है और उसने एक गलत कर दिया तो दूसरा उसका सीक्वेंस खुद बहुत जो है गलत हो जाएगा। तो ये जो है अगर इसलिए उसको एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होती है ये क्वेश्चन की जो आंसर है, तो दैट्स वाई अगर पहला क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है तो पूरा सीक्वेंस जो है वो इनकरेक्ट, बाकी सीक्वेंस भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। Therefore, no review or possibility of correcting previous answer is allowed. The students are provided with a limited amount of patient data and then asked to write a brief answer to a question. Such question may relate to history taking, examination of funding, diagnosis, and investigation, and so on. So they can be used to assess the high level competencies of the medical students. A well-written modified essay question assess the approach of students to solve a problem, their reasoning skill, and their understanding of concepts rather than recall of the factual knowledge. Recall of the factual knowledge के लिए जो हम यूज करते हैं, so these are the MCQs। और अगर हम इन तमाम competencies को अगर असेस करना चाहते हैं तो फिर ये essay question as well as the modified essay question, and somehow the key feature question they are also fit for these situations. Due to the psychometric problem associated with question and dependency, MEQs are being replaced by the key feature question. What we mean by the psychometric problem? Psychometric properties से मुराद ये है कि जो validity and reliability, जैसे अभी हमने कहा कि इसमें जिस तरह कि ये क्वेश्चन होती हैं, एक टाइप होती हैं, अब द ऐसे क्वेश्चन वहां पर somehow उसकी जब हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं आंसर की तो वो स्ट्रक्चरिंग हो सकती है, अंडर स्ट्रक्चरिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से उसकी रिलेबिलिटी और वैलिडिटी दोनों जो है बहुत मुतासिर होती है। तो इसकी दैट लेस रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी की उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो इतनी नहीं होती हैं, इतनी हाई नहीं होती, दैट्स व्हाई these question these MEQs they have been replaced by the
those questions which having high reliability and they are valid for assessing all these skills. So the key future questions they are now used instead of these modified essay questions. Examples will be discussed in the next session. Thank you so much.